Hello friends, welcome to my YouTube channel. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर के पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीएचडी एडमिशन फॉर विंटर सेशन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 नवंबर साइकिल सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2024 इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ, देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। Computer Science and Engineering CSE, Electronics and Communication Engineering ECE, Mechanical Engineering Design, Natural Sciences Physics, Natural Sciences Mathematics. Admissions to the PhD program will be offered under the following categories: full-time with institute financial support, then full-time without institute financial support, and then part-time के लिए है, यही है कैटेगरीज। देख लेते हैं फुल टाइम के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज है। फुल टाइम विद फुल इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एडमिशन कैटेगरीज होगा इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप फेलोशिप रेट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 37,000 दिया जाएगा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 42,000 दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स होगा द स्टूडेंट्स हैविंग क्वालिफाइड गेट सीट CSIR UGC JRF और नेट LS नेट स्कोर will only be admitted under this category. ओके, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोगों के पास ये फेलोशिप होना जरूरी है, वरना आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। The students admitted under this category are entitled for financial support, teaching assistantship as per the Ministry of Education norms. The students is required to assist 8 hours of work per week assigned by the discipline. Then देख लेते हैं फुल टाइम विदाउट इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्ड FA MEIT CSIR UGC DAE DST DBT NBHM etc. The fellowship award will be awarded by various government semi government agencies. तो जिन लोगों के पास गवर्नमेंट एजेंसीज का फेलोशिप है उन लोगों को यहाँ पे इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। The candidate will be admitted to the category if they have financial support from government, semi-government agencies such as CSIR, UGC, DAE, DST, DBT, NBHM, MEIT, Digital India, ARDB, AERB, DAE, etc. The candidates under this category may be assigned a teaching assignment per week by the discipline as per the requirement of the concerned fellowship agency. Then sponsored candidates के लिए देख लेते हैं। These candidates are sponsored by the government recognized R&D organization industries listed with NSE or SEBI for doing research work in the institute. Candidates are expected to be relieved for full-time research work at the institute for a minimum period of 3 years. Okay. Students admitted under the category will not receive any financial support from the institute क्योंकि ये लोग sponsored होगा। Then देख लेते हैं पार्ट टाइम के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है। इंस्टीट्यूट स्टाफ फॉर इंस्टीट्यूट स्टाफ ऑफ IIITDM Jabalpur. This category is only for the persons employed as institute staff at IIITDM Jabalpur. The candidate should have worked in the institute for at least 2 years on a regular position at the time of admission. Then project staff के लिए देख लेते हैं for project staff of IIITDM Jabalpur. This category refers to the candidates working as JRF, SRF in a sponsored project undertaken by the faculty of the institute. All JRF and SRF appointed in the sponsored research projects having minimum funding for 2 years may register for the PhD under the supervision of the PIMCOPI of the project. Such candidate must have qualified GATE, UGC, CSIR, NET or JRF. A duly constituted committee as per the norms of the project funding agency must select them. Such candidates may be converted to regular PhD students, IA category, based on the performance at the end of the project duration. The condition for a maximum of 3.5 years, including the JRF SRF period, will be applicable for giving assistantship or fellowship. Such candidates shall perform the task
assigned by the PI of the project during the project duration. Then external candidates के लिए देख लेते हैं refer point A below for details. ये होगा, देख लेते हैं external और SWP. This category refers to a candidate employed in a government recognized organization or industry listed with SEBI or NSE, BSE and having adequate research facilities. The chairperson Senate shall approve such organization. The person employed in defense or railway establishment or a company industry having turnover of rupees 100 crores with relevant research facility or more at an executive position and have 5 years or more experience in a company is eligible for admission under this category. Applications of such candidates must be properly forwarded by their parent organization and parent organization must submit no objection certificate to the candidate for carrying out the research work here. Such candidates are required to complete the coursework complete करना पड़ेगा and pass the comprehensive examination also. The requirement of gate seat will be waived of such candidates. Okay, नहीं होने से भी चल जाएगा. The candidates will be selected by the discipline committee of the concern. Discipline for the PhD admission. For such candidates, requirement of residence in the institute hostel will be waived. नहीं दिया जाएगा institute hostel भी. Further, they will be given a waiver of teaching pedagogy coursework, but they need to fulfill all other requirements of PhD program. The candidates will have a supervisor from the institute and one external co-supervisor from the concerned establishment. The external co-supervisor must be a PhD degree holder or have relevant experience of 10 years or more. The research work leading to the PhD degree by such students may be carried out largely in the parent organization of the candidates. Eligibility for admission देख लेते हैं सभी के. A minimum of 60% marks और ACPI और CGPA 6 होना जरूरी है. Shall be required at the master's level qualifying examination as the specified minimum for admission to PhD program. Concerned discipline जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे. CSE का होगा यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ये सब दिया हुआ है. अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्वालिफाइड गेट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंसेज और CSIR UGC CRF नेट होना जरूरी है. ECE के लिए भी सेम है. ये सब डिसिप्लिन्स है. मिनिमम क्वालिफिकेशंस और ये अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है. गेट जो भी नेशनल लेवल क्वालिफाइंग एग्जाम होगा वो आप लोगों को पास करना पड़ेगा. पहले क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होना पड़ेगा. ME के लिए भी सेम है. देन डिजाइन, देन NS के लिए MSc MPhil इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स और रिलेवेंट एरिया पे होना जरूरी है और क्वालिफाइड गेट और CSIR UGC CRF नेट. देन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट CSIR JRF नेट और UGC JRF और नेट इन द लास्ट 10 years ओनली. फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा. सपोर्ट अप टू ₹50,000 इज प्रोवाइडेड टुवर्ड्स प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क. Support of ₹50,000 towards travel to international level conference for presenting research work. Additional support of ₹10,000 towards national level conference. Application procedure जैसे कि दिया गया हुआ है. Students can apply only through the online application portal only. There is no provision for offline submission of application forms. If you are applying for more than one discipline, please submit a separate application for each discipline. After successful submission of the application form, please save the application form. You need to furnish hard copy of the application form and self-attached copies of all the relevant documents at the time of interview. Okay. Incomplete application will be rejected. Application fees देख लेते हैं. SC ST के लिए है 300 and other categories के लिए है 500. बाकी सभी के लिए. Important dates कौन सी है देख लेते हैं. Submission of online application commences on 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है. लास्ट डेट है 17 अक्टूबर तक. अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दिया जाएगा 22 अक्टूबर तक. इंटरव्यू और रिटन टेस्ट लिया जाएगा 28 अक्टूबर तक. अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 5
नवंबर के अंदर लिया जाएगा। सेमेस्टर कमेंसमेंट 11 नवंबर। एंड यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी इन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स शैल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। In case of sponsored and part-time categories, candidates shall have a regular employment and shall be required to apply through proper channel. The employer or his authorized signatories. Okay, such candidates shall have served for at least 2 years in a reputed establishment organization associated with design development and or manufacturing of PhD products। यही थे। तो आप लोग रेगुलरली वेबसाइट विजिट करने रहना, कुछ भी डाउट हो तो वेबसाइट विजिट करके रहना रेगुलरली। तो यही तक था आज के वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।